Hello students and a very warm welcome to Supporting Learners. This is the part 15 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. This is the fourth video on the topic transport across plasma membrane, and today we are going to talk about active transport, particularly about exocytosis and endocytosis in this video. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Passive transport is a type of transport in which the substances move along the concentration gradient, that is from a region of high concentration to a region of low concentration. And this type of transport is also called the downhill transport, and passive transport does not require any energy. Okay. पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को, whereas facilitated diffusion requires some special membrane proteins. They can be channel proteins or carrier proteins, right? Whereas active transport, it is also called the uphill transport because in active transport the substances move against the concentration gradient, that is from a region of low concentration to a region of high concentration. And active transport requires the input of energy in मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ये सारी कहानी जो है ये एप्लीकेबल होती है स्मॉल साइज सब्सटेंसेस पे. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को या फिर प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के हेल्प से क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को. बट व्हाट अबाउट द लार्ज साइज सब्सटेंसेस, जिनका साइज इतना बड़ा है कि ना तो वो डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को और ना ही प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस. बट ये जो लार्ज साइज सब्सटेंसेस हैं, दे आर नीडेड बाय द सेल, सो दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ द सेल. So the question here is that how do the large size substances move in and out of the cell? So the answer is endocytosis and exocytosis. Now endo means inside. So the process of transport of the large size substances inside the cell is called endocytosis, and exo means to exit, to move out. Okay, so the process of transport of large size substances out of the cell is called exocytosis. Now both these type of transport are active transport, that is they use energy to transport the substances across the plasma membrane, and they are the bulk transport mechanism in eukaryotes. Why we are saying bulk transport? Bulk transport हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रही है लार्ज साइज सब्सटेंसेस की जो अदरवाइज मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, राइट. एंड ऑल्सो दे आर नोन एज दी वेसिकल ट्रांसपोर्ट बिकॉज इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है. व्हाट आर वेसिकल्स? दैट वी विल लुक फॉरवर्ड व्हेन वी स्टडी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इन डिटेल. First let's start with endocytosis. Endo, as I said, endo means inside. So endocytosis is the process in which the substances are brought into the cell. Okay, इसमें substances cell के अंदर enter कर रहे हैं, right? अब ये process होता कैसे है? Now इसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है. कैसे होती है? देखो, this is the diagram and this is the plasma membrane. This is the plasma membrane and this is the outside region of the cell and this is the inside region of the cell, and these are the substances that have to be transported inside the cell. So plasma membrane, it folds itself, it infolds itself and forms a pocket around the substances that are to be transported. So यहाँ पर एक pocket की formation हो जाती है and this pocket then pinches off, which results in the formation of the vesicle. This is the vesicle. ठीक है, vesicle जो है, this structure contains the substances which were to be brought inside the cell. Okay, and it is surrounded by the plasma membrane. ठीक है, because this is formed by the plasma membrane. This structure, this vesicle is formed by the plasma membrane to bring in the substances inside the cell. इसको एक animation में देख लेते हैं हम. So this is how the endocytosis takes place.
infolding of the plasma membrane which pinches off and forms a vesicle. Now this endocytosis is of two types. First is phagocytosis. Phagocytosis which means cellular eating. ठीक है, इसमें solids जो है ये enter करते हैं सेल के. And pinocytosis which is also called cellular drinking, इसमें liquids enter करते हैं सेल के, that is why it is called cellular drinking. So phagocytosis is the intake of solid particles by a cell, that is why it is also called cellular eating. Now let us look at some of the examples. Now phagocytosis is a means of feeding. Feeding means to take in food in some organisms like amoeba. Now amoeba is a single celled organism. It does not have any fixed shape. So how does amoeba take in the food? Basically यहाँ पर ये देखो, ये food particle है. So what it does is it forms a finger like projections called pseudopodia. ठीक है, pseudopodia, pseudo means false and podia means feet. So amoeba, it forms finger like projections around this food particle which are called pseudopodia, and these finger like projections of the cell, they fuse with this food particle to form a food vacuole. And inside this food vacuole जो है जी, ये food particle है, that is a very complex substance that is broken down into simpler substances by the help of some enzymes, and then those substances diffuse into the cell. ठीक है, सो ये सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं यहाँ पर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ phagocytosis which is a means of taking in food by a single cell organism called amoeba. Okay, next example in higher animals, higher organisms में phagocytosis जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है. बेसिकली आपकी बॉडी में जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस एंटर करते हैं, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria etc. which can be pathogenic, they can cause diseases. So they are phagocytosed by which type of cells? By WBCs, that is the white blood cells. अब white blood cells के भी types होते हैं. इसमें जो phagocytosis करते हैं वो होते हैं neutrophils and macrophages. Very very important, lot of times in MCQs these two types of cells are asked. The type of WBCs which are responsible for phagocytosis. Okay, so this is how WBCs look like. So WBCs which perform the function of phagocytosis, they are called the phagocytes. So again, they form pseudopodia and they engulf the bacteria, and inside this WBC, these bacteria are digested. Okay, so phagocytosis करते हैं WBCs, that is neutrophils and macrophages. और ये क्या क्या phagocytose कर सकते हैं? बैक्टीरिया को phagocytose कर सकते हैं, dead tissues and cells, जो कि जिन cells की death हो जाती है, they are not required by your body now. ठीक है, तो they have to be removed, they have to be eliminated. So WBCs are responsible for that. Protozoa and various dust particles, pigments and other minute foreign particles, they are phagocytosed by the WBCs. Okay. Now let's move to pinocytosis. Pinocytosis is also a type of endocytosis. इसमें क्या होता है, जो आपका liquid होता है, that is taken inside the cell. That is why it is also called cellular drinking. Okay. So यहाँ पर यही है, vesicles की formation होती है and this extracellular fluid is taken inside the cell by the formation of the vesicles, right? नोट है यहाँ पर कि एंडोसाइटोसिस जो है वो प्लांट सेल्स शो नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है एंड सेल वॉल इज वेरी रिजिड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, इट कैन मूव, बट सेल वॉल इट इज वेरी वेरी रिजिड. So endocytosis is not possible in plant cells. So endocytosis किस में होगा? Animal cells में होगा, and it also occurs in yeast cells. Okay. Moving on to exocytosis. Now exocytosis, exo is outside. So in this process the substances they move outside the cell, of course with the use of energy. So this is also called cell vomiting or e-phagy. अब ये exocytosis का process होता कैसे है इसको समझते हैं. एक्सोसाइटोसिस में होता क्या है ना, यहाँ पर ये वेसिकल है, दिस वेसिकल गोज एंड फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, वेसिकल फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये जो इसके अंदर की सब्सटेंसेस हैं दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
Let's look at the animation to understand it in a better way. So this is how this vesicle goes and fuse and the substances are expelled out of the plasma membrane. Now ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कब होगा? जब हमें किसी सब्सटेंस को बाहर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है. कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जैसे कि प्रोटीन्स हैं, देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स विच आर टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है सेल के बाहर. या फिर सेकेंड केस क्या है कि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो एक टॉक्सिन है या एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो दैट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल एज सून एज पॉसिबल. Now let's talk about the examples of exocytosis. Exocytosis आप हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज द गोल्जी apparatus एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस. और राइबोसोम्स जो हैं दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ योर सेल. प्रोटीन्स जो हैं ये यहाँ पर बनते हैं. अब ये प्रोटीन यहाँ पर बनने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए तो नहीं बने हैं. दीज आर नीडेड, ये आपकी बॉडी को इनकी नीड है. सो इनको ट्रांसपोर्ट होना है टू वेर एवर दे आर नीडेड इन द बॉडी, राइट. तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? these proteins will be transported in the form of vesicles. यहाँ पर ये प्रोटीन्स जो हैं ये वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं. these vesicles they pinch out from the endoplasmic reticulum and these vesicles they carry with them the proteins and they are transported to the Golgi apparatus. Golgi apparatus में होती है इन प्रोटीन्स की पैकेजिंग एंड इनकी मॉडिफिकेशन फॉर द फाइनल ट्रांसपोर्ट. ओके, सो Golgi apparatus से अगेन वेसिकल्स बड ऑफ होते हैं एंड दीज वेसिकल्स दे आर कॉल्ड द secretory vesicles and they fuse with the plasma membrane. These vesicles fuse with the plasma membrane and then these proteins are expelled out of the cell wherever they are needed in the body. So this is the vesicular transport that occurs, vesicular transport of proteins that occurs in your body with the help of the process called exocytosis. And the next example is in the neurons. न्यूरॉन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. और ये मैसेज कंडक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एन इम्पल्स, राइट. इसकी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है और कंडक्ट होती है. तो अब ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन? सो बेसिकली क्या होता है कि ये न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये जो है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड दीज वेसिकल्स. ये वेसिकल्स जो हैं ये फ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ एंड द न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर रिलीज्ड इन अ रीजन कॉल्ड द साइनैप्स. साइनैप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है. यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और दूसरे सेकेंड इसके जो एडजेसेंट जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करते हैं एंड देन दिस इज हाउ द इम्पल्स द सिग्नल is sent to the next neuron and so on. So all these things you are going to read in the in biology in some or the other chapter, but what I am trying to do is that I am going to making you familiar about all these terms. Okay, so अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा टॉपिक खत्म होता है. ये इसका फ्लो चार्ट है, एक टाइप की समरी है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप्स का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Passive transport, again we have studied three types: simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. Facilitated diffusion can take place with the help of channel proteins or the carrier proteins, whereas active transport जो है this can take place with the help of pumps. We have studied about sodium potassium pump in very detail
and it can also take place in the with the help of vesicles, in which we have studied about the endocytosis and exocytosis, and in endocytosis we have studied about the phagocytosis in Pinot. So with this we complete the topic of transport across plasma membrane. I hope you were able to understand it. If you are finding these videos informative, then like the videos, share it and subscribe to Supporting Learners, and also hit the bell icon if you haven't, so that you don't miss any video. And you can also comment, you can also write, so that आपके एक comment से मुझे बहुत ज़्यादा idea लगता है कि आपको whether you are understanding the concepts or not, or what how you want to study basically. So do write to me, and I'll be very happy to read those comments, and I'll see you in the next video.